Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Sharmeen Sehgal, ladies and gentlemen, and Mizan! Welcome up on stage, you guys. I saw both of you getting very emotional in the front row. Mizan, बहुत ही emotional moment है. Your dad was also getting senti sitting right there. Yeah, it's... Has it begun to feel real कि अब ये हो रहा है, वो date लिखी हुई है पीछे 28 जून? I know it's been a while and we've really been waiting and you know we've put a lot of love into this project. And my legs are shaking. It's really overwhelming watching it on this bigger screen. You see it in the office with sometimes when So decides, chalo, do you want to see what you all have done? But watching it like this, it's a whole different experience. Like I just felt like sitting there and crying. It just felt unreal. It was unbelievable. Sharmeen, you're debuting with the Sanjay Leela Bhansali production. Now, Sanjay sir has given a lot of actresses a lot of amazing roles to play in their careers, which have been landmark movies in their careers. And now your name is, in the likes of Manisha Koirala and Priyanka Chopra, Deepika Padukone. Does it, like... Those are really big names. Pinching yourself every morning when you get up? It's a surreal feeling that Sanjay Leela Bhansali thinks about you. It's like, you don't think that when you get a call saying, how are you doing? Is everything going well? You go... Like one of the biggest directors in this country is calling you and saying, how are you doing? You better be doing well. Doing great, sir. Yeah, I'm trying to. Because you can't be 100% sure. But it feels amazing. It feels unreal that and the actresses that you named are too big. Hopefully at some point in my life, I'll get to where they've gotten to. But I'm just right now really happy and like not here. Mizan, same question to you, because when you look at the actors, the male actors Sanjay sir has worked with, there's Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, and Salman Khan, so many. And to hear your name in the same sentence. Really big names to be even comparing yourself with, and there's a long way to go. Yeah. And I hope it's a lot of pressure and a lot of responsibility, And I hope that we've done justice to it because we've put in a lot of effort and a lot of love into this project. And I hope everyone likes it. Yeah. Mizan, when did you know that you were going to be the lead in Malal? When that happened? Around 2 years back, 3 years back actually. I had met Sir 5 years back when he was working on the pre-production of Baji Rao, and he told me that he wanted to launch me and that I should act. And I'll never forget that day. It was... And oh, you're so sweet. Are we going to get to see any Khandani dance moves in this film, by the way? Not Khandani, but yes, a lot of dance. Yay. And the amazing music that Sir has put into this film. And yeah, he would keep chewing my brains. Sir, वो गाना थोड़ा muffled नहीं हो गया, वो थोड़ा ये नहीं हो गया, वो थोड़ा rhythm add कर सकते, वो थोड़ा ऐसा कर सकते. अरे मैंने कहा भैया, अभी तो शुरू हुए हो, अभी से. Sharmeen, आप भी काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं इस कैरेक्टर के लिए. So what kind of preparations went into making this come alive? What kind of preparations? Mangesh sir didn't give us the script for 2 years. We were sitting scriptless for 2 years, and every day he'd just say, Samu, Mizan, office aaja, kahani sunte hain. So he used to just come, tell us stories for 2 years, and then 10 days before shooting, he gave us the script. We didn't look at it. Like, I hardly looked at it because he told us so much about the character when we were talking. That was the only prep. That was enough.
father emotional moment for you also, I see. What is happening? Everybody's so senti right now. I mean, it's great. Very emotional to see that up there. जी बिल्कुल. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम बीइंग संजय लीला भंसाली फिल्म, ये दो एक्टर्स की पहली अपीयरेंस है पूरी दुनिया के सामने. तो सेट पर डिड यू फील लाइक अ लिटिल बिट लाइक अ स्टूडेंट, लिटिल बिट लाइक अ टीचर, ये फिल्म बनाते हुए? नहीं, एक्चुअली हम जो शारमीन ने जैसे बताया 2 साल पहले, तो हम दोस्त बन चुके थे. तो टीचर तो यही थे, हम तो तीनों स्टूडेंट तो हम तीनों थे. आप तीनों स्टूडेंट्स एक साथ. मूवी के ट्रेलर में एक बड़ा स्पेसिफिक मुंबई का फ्लेवर है, इस शहर के जो डांसेस हैं, जो म्यूजिक है. तो ये आपका डिसीजन था टू सेट इट वेयर यू सेट इट इन मुंबई सिटी? हाँ, बेसिकली अभी सब हम मोबाइल गैजेट्स और इसका इस्तेमाल करते. तो 98 जब मोबाइल आए थे और हम इतने उसको यूज़ भी नहीं करते थे. तो जहाँ जो शिवा का कैरेक्टर है, शिवा मोरे का, वो चौल में पहला तो एक बिल्डिंग में था. मतलब जब सर को मैंने नरेशन दिया तो सर ने वो बिल्डिंग से चौल में हम लेके गए उसको. और फिर वो कहानी मुंबई की बनी. आप अपने एक्टर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं हमारे मीडिया के दोस्तों को? वो दोनों भी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती है. सबसे अच्छे दोनों बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है. और मुझे डर यही था कि मेरी परवरिश किसी छोटे से गांव में हुई है. मैं मराठी मीडियम में वहाँ पढ़ा हूँ, ये लोग मुंबई में पढ़े हैं. तो ह्यूमन लेवल पे हम अच्छे जुड़ जाएगी कि नहीं जाएगी, तभी फिल्म अच्छी बनेगी. और वो दोनों बहुत मेहनती और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है. तो उन्होंने जो मैं बोलता था वो, या कभी सर हम तीनों को समझाते थे, वो सारा बहुत अच्छे से अप्लाई किया. और वो शायद अभी सबको अच्छा लगेगा. मीज़ान, मंगेश सर की एक टीचिंग जो आपके साथ रहेगी हमेशा, जो उन्होंने सिखाया आपको सेट पर? Oh, there are a lot of teachings, but one which is really memorable. Vangi sir always used to tell me, he's like, हमने इतने साल workshop किए हैं, 2 years, we did workshops for this film, and I feel subconsciously the characters were so in us that even we didn't know, and Mangesh sir always used to tell me on set that तू कर लेगा. He's like, just forget it and just be yourself and be Shiva and be happy and enjoy whatever you do. That's something that he used to always tell me. He's like, if you're not going to enjoy it, then what's the point? Be happy and always enjoy whatever you do. And I think this is something that both of us love doing, and we really had a blast in this whole journey. शर्मीन, ऐसी रीअश्योरेंस आपके लिए भी सेट पर? For me, it was patience. From Mangesh sir has a lot of patience to work with both of us. First films, he helped us with our anxiety, with a lot of things that, like, I don't think anybody other than Mangesh sir would have been able to handle. And it also, him being patient with us taught me how to be patient with my work, the people around me. So he was the biggest support system that we could have asked for on set. सर, आपके पास तो मतलब कितनी सारी स्टोरीज और कितनी सारी स्क्रिप्ट्स आती होंगी. किसी के साथ डायरेक्टर अटैच्ड हैं, किसी के साथ एक्टर्स अटैच्ड हैं. मलाल में ऐसा आपको क्या दिखाई दिया दैट यू वर लाइक, ये फिल्म हम सपोर्ट करेंगे? मिस्टर संजय लीला भंसाली. एक वर्ड ही काफी है, आई थिंक. Just one word is enough. Anything that would you like to thank your producers? Well, thank you so much भूषण जी यहाँ पे जाने के लिए. हम जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं, अगले प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि संजय सर भी यहाँ पे खड़े हैं, उनको भी स्टेज पे बुला लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवी. Could I have Mr. Mahavir Jain up on stage, please? Mahavir ji, being here today. You have supported Mangesh sir on every step of the way. This is your third film together, I believe. Your third feature film. तो मंगेश जी में ऐसा क्या है जो आप इस पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं इनके ऊपर? मंगेश जी, आई विल से कि आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, पर उन्होंने अभी तक किसी को लाइफ में असिस्ट नहीं किया और वो डायरेक्टली डायरेक्टर बने. इनके अंदर एक विजन था, एक कहानी कहने का एक जज्बा था. आप
किसान के परिवार से आते हैं और महीने में 15 दिन आज भी खेती करते हैं जब बॉम्बे में नहीं होते, तो वो उस जड़ों से जुड़े हुए हैं। कमाल के इंसान है मंगेश जी। जैसे जैसे मैंने वक्त बिताया उनके साथ, उनके अंदर मैंने पाया कि व्हाट अ मैन ही इज़। सो ये चीज़ ने मुझे उनके साथ बहुत जोड़े रखा और हम लोग साथ में ही जर्नी हम लोगों ने